मोहतरम सामईन व नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत में 5 स्लाइड्स जो पेश कर रहा हूँ वो बहुत काम के हैं, बहुत कारआमद हैं, बहुत मुफीद हैं। तो इनको आप ज़रूर पढ़ें और जितना भी हो सके इन स्लाइड्स को आप शेयर करें। तो बात यह है कि आपके घरों में जो एयर कंडीशनर्स लगे होते हैं वो कई तरह के वैसे तो होते हैं, लेकिन आम तौर से एक दीवार में लगने वाले होते हैं और एक स्प्लिट एसी होते हैं, जिनके स्प्लिट एसी के 2 पार्ट्स होते हैं, दीवार में लगने वाले के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक इंटरनल यानी एक एक्सटर्नल। तो आपका फ़र्ज़ है कि गर्मियों का क्योंकि मौसम अब अनकरीब आने वाला है, तो आपकी ज़िम्मेदारी है, आपकी ज़रूरत है कि आप अपने एसी का ख़र्चा मेंटेनेंस का या रिपेयर्स का बचाने के लिए उसको पहले से तैयार करके रखें, ताकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा ना खर्च हो और उसका ख़र्चा भी ज़्यादा ना हो। तो उसके लिए जो तरीक़े बताए गए हैं इन और मज़ीद स्लाइड्स में, उनको भी गौर से पढ़िए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपसे इंग्लिश में तज़किरा करूँगा कि माय डियर व्यूअर्स, today we will study about the process of how to maintain our air conditioners in good condition, because there are mostly two types, otherwise there are so many types of air conditioners. One is fixed in walls by cutting the wall, and the second one is the split unit. Both of them have 2 parts, one inner and one outer. So we have to keep maintained our air conditioners before the summer season starts. This is not only for you, but for those who are using the air conditioners. So please share these slides to them also. Thank you very much. अच्छा, ये जो सामाइन और नादरीन, ये टॉपिक तो बहुत तवील है, मगर मैं सिर्फ चंद अल्फाज में बहुत ज़रूरी, जो नहायत ज़रूरी चीज़ें हैं उसका तज़किरा कर रहा हूँ। तो इस स्लाइड में मैं ये ज़िक्र करूँगा कि जो आपके एयर कंडीशनर्स में फ़िल्टर्स होते हैं उनकी सफाई बहुत ज़रूरी है, उनको तब्दील करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ख़ुद कर सकते हैं तो आप ख़ुद करें, अगर नहीं कर सकते हैं तो आप बाहर से टेक्नीशियन को बुलाएं और उससे गर्मियों का मौसम शुरू होने से पहले और एसी को इस्तेमाल करने से पहले आप फ़िल्टर ज़रूर साफ़ करवा लें। नाउ प्रिपेयर your air conditioner before the summer season starts. I mean, it is approaching very soon. Summer is approaching, and the hot airs are started. So you have to take care of your air conditioners by replacing the filter, cleaning it. If you can fix the filters yourself, do it yourself. Otherwise, ask some technician to come and clean your filter. Cleaning of filter makes the AC more perfect and more workable, because proper maintenance improves the performance of the air conditioners. So you have to take care of all these things. Please review the pictures also, how the filter is going to be changed, how the technician is changing or yourself changing the filter. अच्छा नाजरीन और सामाइन, ये जो हमारे एयर कंडीशनर्स का बाहर का यूनिट होता है ना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि इसकी सफाई सुथराई रखी जाए। अगर दीवार में वो नस्ब है ऊपर, तो इतना ख़तरा नहीं होता कि उसमें सांप बिच्छू या इस तरह की चीज़ें खुदा न करे चली जाएं। इसके अलावा कीड़े मकोड़े और पत्ते और घास, ये वो सब बाहर के यूनिट में जमा हो जाए तो यूनिट को वो ख़राब कर देते हैं और ख़तरनाक भी होते हैं। बाहर की यूनिट जब खुलती है तो खुदा न करे उसमें किसी तरह से कोई कीड़ा या सांप वगैरह अंदर चला जाए, तो जिस वक्त टेक्नीशियन उसको उठा के ले जाने के लिए आता है तो वो उसके लिए जान का ख़तरा भी हो सकता है। तो बाहर की यूनिट की बहुत केयर करना चाहिए, उसकी सफाई रखना चाहिए, उसमें से पत्ते वगैरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उसको कवर ना करवाएं,
वरना फिर क्या होगा कि जो गर्म हवा है वो बाहर नहीं निकल सकेगी और एयर कंडीशनर काम नहीं करेगा, अंदर ठंडी हवा देना मुश्किल हो जाएगी, इसके ऊपर बहुत दबाव पड़ेगा। Now we will discuss about the outer unit. As you can see in the picture also, that outer unit in this picture is placed at the bottom, but most of the time the people are even it is window type or split unit or any type, they are fixing on upper place of the walls, so that is better. While placing at ground or bottom of the wall, it's risky also. Sometimes the creatures, the animal, the snakes or anything, or scorpions or anything can enter in external unit, which is dangerous also. At the same time, the leaves, the dry leaves, while from the trees comes and gather are inserted in the external unit, as well as you have to take care that external unit should not be covered, so that the hot air coming from inside should not be obstruction. So these cares are to be taken, and you have to read all the slides one by one. Maybe I am talking sometimes wrong also. Thank you very much. मोहतरम सामीन व नाजरीन, हम बैरूनी यूनिट्स के बारे में तो आपको बता चुके हैं पिछली स्लाइड में कि क्या एहतियातें लाजिम हैं। इस स्लाइड में अंदरूनी यूनिट के बारे में चंद लाइनें मैं बहुत मुख्तसर करके बयान कर रहा हूँ कि चंद लाइनें आपके खिदमत में पेश कर रहा हूँ। एक तो ये कि अंदरूनी यूनिट के को किसी तरह से जहाँ से हवा निकल रही है, हवा का प्रेशर आ रहा है, उसको ब्लॉक नहीं होना चाहिए। अगर आपको महसूस हो रहा है कि हवा कम आ रही है, कमज़ोर है, प्रेशर कम है और किसी तरह की आवाज़ भी आ रही है, तो फौरी तौर पर आप टेक्नीशियन को बुलाएं और जो इसमें कमज़ोरी है या नुक्स है उसको फौरी तौर पर रिपेयर करवाएं, वरना एसी ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होने का ख़तरा होता है। नाउ please pay attention towards your internal unit, especially because we have discussed in our previous slide about the external unit. Now we will discuss about internal unit. When we are getting the cold air, and if we feel the pressure is less or air is not coming much colder than as required on your thermostat, so you have to take care of that. If there is any sound, you have to take the AC technician and to ask him to get it repaired as early as possible. So early care reduces the cost of maintenance as well as the time wastage. Thank you very much. आखिरी स्लाइड में भी मैं आपसे यही अर्ज़ करूँगा कि ज़रूरत पड़ने पर किसी माहिर टेक्नीशियन को बुलाएं, ऐरे गैरे को ना बुलाएं, किसी अच्छे टेक्नीशियन को बुला के अपने एसी को गर्मियों का मौसम आने से पहले चेक करवा लें कि हर चीज़ उसकी सही काम कर रही है। मैंने आज ही टेलीफ़ोन किया है एक टेक्नीशियन को जो बहुत एक्सपर्ट है, उसको मैंने टेलीफ़ोन करके कहा है कि आ जाएं, आप हमारा एसी चेक कर लें। तो आपसे भी दरख्वास्त है कि अपने एयर कंडीशनर्स को आप ज़रूर चेक करवाएं और उसमें कॉइल चेक करवाएं, उसमें वोल्टेज चेक करवाएं, उसकी वायरिंग चेक करवाएं और उसके तमाम निज़ाम को चेक करवाएं, फ़िल्टर को बदलवाएं, तमाम चीज़ें बिल्कुल इन ऑर्डर कर लें, तब एसी को ऑपरेट करें। अभी गर्मियाँ इतनी नहीं आई हैं, लेकिन ये कि आप ज़रूरी है कि आप गर्मियाँ आने से पहले अपने एसी को अच्छी कंडीशन में कर लें। So my dear viewers, as you know, I have discussed in previous slides how to keep eye on your air conditioners and your system to keep in intact and in good condition. In this slide also I have highlighted few points. You have to only call the expert and technical person, because if you will call some non-technical person, he may not understand what is the wrong with your AC and what is the performance is not satisfactory. So you have to call a qualified and technical technician. So you have to get it checked
the voltage of the wiring and the AC cooling of AC cooling is good, and filter is already being changed, and whatever you can do it. अब मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा इस फाइनल स्लाइड में कि मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। लिंक मैंने इस स्लाइड के बॉटम में दे दिया है। मैं आपसे फिर दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ अपने दोस्तों में, अहबाबों में इसको ज़रूर शेयर करें। My dear viewers, I request you to kindly subscribe, like and share my YouTube channel, and your support will be countable. I will be happy for that, and I can present more and more better presentations to you. So please subscribe, like and share my YouTube channel. The link of my one of the channel, because I have two channels. One is related to how to learn engineering, and the above one, this one is informative channel for all the ages. So this channel is giving you the good informations and good informative articles are there. Thank you very much.